ভিউৱাৰ্ছ, মই অৰ্জুন আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ NPS ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলত আৰু মোৰ লগত আছে কিছুমান NPSৰ ষ্টুডেণ্টছ যোনে ৰিচেণ্টলি নিট এক্সামত মানে বহুত ভাল ফলাফল অৰ্জন কৰিছে। তো আহকচোন বলক আজি তেখেতৰ লগতে কিছুমান কথা পাতোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু তেখেতক কি কয় তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা। আমাৰ লগত আছে সাহিল, অৰ্ণৱ আৰু ৰাহিল। চ' আহক বলক জানো সিহঁতৰ মনৰ কথা। চ' সাহিল, ফাৰ্ষ্ট অফ অল কংগ্ৰেচুলেশ্যন, তুমি নৰ্থ ইষ্টৰ টপ কৰাৰ কাৰণে। অকণমান তোমাৰ বিষয়ত কোৱা, তুমি তোমাৰ স্কুলিং এণ্ড অল ক'ৰ পৰা কৰিছা? थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। फिर मेरा स्कूलिंग इधर NPS से हुआ। 11-12 में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देखने के बाद इधर आया NPS पे। फिर इधर भी बहुत हेल्पफुल था क्योंकि द मेन थिंग जो था वो टाइम बचा मेरा, तो मैं उस टाइम को सेल्फ स्टडी में ज़्यादा इनपुट कर पाया, इसलिए मैं NPS के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और मेरा पेरेंट्स, फैमिली सब हमेशा सपोर्टिव रहे, टीचर्स सब सपोर्टिव रहे, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। আৰু তুমিও ইয়াৰ পৰাই পঢ়ি আছা? মই ক্লাছ 11-12 NPSত পঢ়িছিলোঁ আৰু ক্লাছ 10লৈকে মই VKBত পঢ়িছিলোঁ। এণ্ড হাউ ইজ ইউৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন NPS? মাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন NPS ইজ ভেৰি গুড। ইয়াৰ পৰা মই বহুত সহায় পাইছোঁ। যোনখিনি ফেকাল্টি আছে, যোনখিনি স্কুলৰ ফেকাল্টি আছে, যোনখিনি ৰিজনেঞ্চৰ ফেকাল্টি আছে আৰু যোনখিনি গোটেইখিনি ষ্টাফখিনিয়ে মোক বহুত হেল্প কৰিছে আৰু মোক যেতিয়া কিবা প্ৰব্লেম হৈছিল গোটেইখিনি ছল্ভ কৰি দিছে আৰু সেইটো কাৰণে মই বহুত থেংকফুল হয়। ৰাহিল, NPSৰ তোমাৰ কি চবতকৈ বেছি ভাল লাগে, যিটো মানে ইয়াতে মানে ষ্টাডি কালচাৰ, যিটো মানে তোমাকো হেল্প কৰিছে চাগে নিটখিনি ক্লিয়াৰ কৰে, তাৰ বিষয়ত তুমি আমাক কি জনাব বিচাৰিবা? চবতকৈ হেল্পফুল আছিল NPSত চবতকৈ হেল্পফুল আছিলে ইণ্টিগ্ৰেটেড কোচিং প্ৰগ্ৰামটো। তাতে মানে কোচিঙৰ টিচাৰ্ছে আমাক ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিত হেল্প কৰিছে আৰু বেলেগ ছাবজেক্টছ মানে বৰ্ডৰ কাৰণে আমাক বেলেগ ফেকাল্টিয়ে গাইড কৰিছে। সেইকাৰণে মই বৰ্ড আৰু নিট দুটাতে মানে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছোঁ আৰু বহুত হেল্প কৰিছে টিচাৰ্ছবোৰে। বৰ্ডৰ হওক, নিটৰ কুৱেশ্যন হওক, চববিলাক ভালকৈ গাইড কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত তোমাৰ মানে যিটো মানে আপকামিং চবৰ এটা মানে ফিউচাৰত এটা মানে ড্ৰিম কলেজ থাকে ন, যাই কিনে য'ৰ পৰা মানে নিজৰ ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিজবোৰ পাৰ্চুই কৰিব বা প্ৰেক্টিছবোৰ পাৰ্চুই কৰিব, তোমাৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কলেজ আছেনে য'ত মানে তুমি তোমাৰ মেডিকেল লাইনটো আৰু আগবঢ়াব বিচাৰিছা? মই মোৰ সৰুৰ পৰা মানে ড্ৰিম আছিল যে মই এইমছ নিচিনা কলেজত পঢ়িব পাৰিলে মানে ভাল হ'ব বুলি। সেইকাৰণে মই যেতিয়া কাউন্সিলিং হ'ব তেতিয়া এইমছত ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তোমাৰ? মোৰ ড্ৰিম কলেজ এতিয়া काउंसलिंगत मैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ट्राई करीम। साहिल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी जैसे टॉप किया है नॉर्थ ईस्ट में नीट के एग्ज़ाम में, तो आपका जब मतलब आप जब प्रिपेयर करते थे, किसी तरह की स्ट्रेटेजी, किसी तरह की टेक्टिक्स आप फॉलो करते थे? ऐसे कुछ स्पेशल टेक्निक्स नहीं है, सब कुछ सिंपल ही होता है। मतलब मोस्टली लोग चला जाता है कि कुछ स्पेशल करना, बट सब कुछ नॉर्मली एक सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होता है, वही है। और NCERT के साथ स्टिक करना ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत जन चला जाता है कि ये कर लेता, वो कर लेता, बट उस सब में कोई यूज़फुलनेस नहीं है। आजकल का ट्रेंड नहीं, आजकल क्योंकि पेपर ही आ जाता है सिर्फ NCERT से, तो बस मैंने ये सब एनालाइज कर लिया था कि सिर्फ NCERT पढ़ने से बहुत हेल्पफुल होता है और सेल्फ स्टडी में प्राइमरी फोकस था, तो यही था बस। आपने कहा है कि मतलब सेल्फ स्टडी के बारे में, तो अक्सर लोगों को देखते हैं कि हम लोग कोई मतलब कोचिंग्स वगैरह भी लेते हैं या फिर ट्यूटर्स भी लेते हैं इसके लिए, तो आप क्या समझते हो कि मतलब सेल्फ स्टडीज को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो या फिर कोचिंग भी उतना ही मतलब इफेक्टिव होता है या फिर वो भी नेसेसरी है? जैसे एक ह्यूमन नेचर ही होता है कि मतलब हम लोग का प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट एक अगर कोई गाइडेंस हो जाता है तो वो बहुत एड कर लेता है हम लोग का प्रिपरेशन में। तो अगर ज़रूरी नहीं कि हाँ कोई कोचिंग ही जाए, अगर उनके साथ कोई अच्छा टीचर भी है और वो गाइड करते हैं थ्रू आउट द जर्नी, तो सेल्फ स्टडी से कोई भी अच्छा से क्रैक कर लेता है। এতিয়া মই তোমালোকক অলপ অফ দি ট্ৰেক, নট মানে কি ইমান চিৰিয়াছ কুৱেশ্যন নহয়, অলপ সুধিছোঁ। আমাৰ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এচিভমেণ্টছবোৰ আহে, বিশেষকৈ আমাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যিবোৰ থাকে, আমাৰ একেলগত তোমালোকৰ যিবোৰ মানে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল আছে, চবে চাগে এইটো নিশ্চয় সোধে কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলি বুলি কেনে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ তোমালোকে সন্মুখীন হৈছানে? হয়, মোক মানে মোৰ লগৰবোৰে সুধিছে যে তুমি কিমান ঘণ্টা পঢ়িছিলা, কেনেকৈ পঢ়িছিলা, মানে সিহঁতকো গাইড কৰিব দিছে, সেইখিনি মানে প্ৰশ্ন সোধে সিহঁতি। আৰু এনে কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলা তুমি? মই এনেই যেতিয়া স্কুল খোলা আছিল তেতিয়া এৰাউণ্ড 6 আৱাৰ্ছ চেল্ফ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ, আৰু যেতিয়া বন্ধ হৈছিল তেতিয়া অকণমান বঢ়াই দিছিলোঁ, মানে 8-9 আৱাৰ্ছ হৈ গৈছিল। তোমাৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটোৰ বিষয়ে?
মই এনেকুৱাই স্কুল খোলা সময়ত তেতিয়া মই 6-7 আৱাৰ্ছ ছেল্ফ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ আৰু বন্ধৰ টাইমত ছানডে মেইনলি মই ফ'কাছ কৰিছিলোঁ মানে মোৰ স্কুলৰ পৰা ঘৰ অলপ দূৰ সেইকাৰণে মই ছানডেত ভালকৈ পঢ়িছিলোঁ পূৰা ডিভ'ট কৰিছিলোঁ ষ্টাডি টাইম। আৰু এপাৰ্ট ফ্ৰম মানে ষ্টাডিং আৰু কি কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ কৰি তোমালোক ভাল পোৱা? মই এনেই মানে আৰ্ট কৰি ভাল পাওঁ, স্কেচিং কৰোঁ। তাৰপিছত আৰু যেতিয়া মানে মোৰ কিবা ব'ৰ হৈ যাওঁ তেতিয়া অলপমান গেমিঙো কৰিছিলোঁ। আচ্ছা, পাবজি? নহয় পাবজি নহয়, এতিয়া পাবজিটো বেনে আছিলে এই 2 বছৰমান, এই মানে বেলেগ খেলিছিলোঁ। আচ্ছা, তোমাৰ মই এনেই মুভি চাই ভাল পাওঁ, বহুত মুভি চাওঁ মই এনেই। এতিয়াও নিটৰ পিছত মানে পূৰা মুভি চাই আছোঁ এতিয়া। মুন্না ভাই MBBS? মই চব চাওঁ মই, ফ্ৰম চাউথ ইণ্ডিয়া টু হলিউড বলিউড চব চাওঁ। ফেভৰেট কোনটো, সাউথ নে বলিউড? মোৰ বলিউডে আছে এতিয়া। और आपको अगर पूछा जाए साहिल कि मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग आप जब फ्री होते हो तो आप उस वक्त मतलब कैसे, मतलब उस वक्त को कैसे आप पास करते हो? मैं तो हॉस्टल था तो इधर में बहुत अच्छा हम लोग का ये ग्राउंड वाउंड भी था, तो इधर हम लोग का फ्रेंड्स या फिर जूनियर्स इन लोग के साथ मैं फ़ुटबॉल खेलने निकल जाता था एवरी आफ्टरनून को। जैसे स्कूल ख़त्म किया फिर हम लोग खाना वाना खा के फिर हम लोग खेलने चला जाता, फिर उधर में थोड़ा सा फ्रेश हो उसके बाद सेल्फ स्टडीज़ ये सब में लग जाता था, तो वो बहुत अच्छा एक बैलेंस बना लेता था इस सब में। और फिर हॉस्टल में तो उतना मोबाइल एक्सेस ये सब तो था नहीं, बट जब भी घर में था तब मूवीज़ ये सब देख लेता था या फिर गेम्स खेल लेता था। जब आप इस तरह की मतलब किसी पर्टिकुलर कोर्स को जब मतलब आप स्टडी करते हो या फिर उसके लिए प्रिपरेशन करते हो, जो रिफ्रेशमेंट जो होता है, रिफ्रेशमेंट पीरियड या फिर लेजर पीरियड, वो कितना मायने रखता है? अभी अगर कोई एक ही चीज़ बार बार अगर पढ़ने लग जाता है ना, उसका एफिशिएंसी खुद ही कम हो जाता है, तो ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। मैं खुद सेल्फ स्टडी के टाइम में भी ब्रेक्स ही लेता था। जैसे अगर हो गया कि मैं ऐसे मतलब फिक्स टाइम्स नहीं रखता था, जैसे एक चैप्टर ख़त्म किया थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से कहीं और लग जाता था, तो ये सब ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर एक एन्जॉयमेंट मूड हो तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाता है पढ़ने का, एक फ्रेश माइंड होने से, तो खेलने स्पोर्ट्स ये सब में इन्वॉल्व होने से बेटर होता है। ये सब सिर्फ पढ़ाई से तो आजकल भी कुछ तो नहीं होता नहीं। फिर उसके बाद भी हम लोग को फर्दर तो ये नीट में तो चलिए कि 720 का पेपर देना है तो सब लोग कंपटीशन हाई है, बट उसके बाद तो हम लोग का सोशल स्किल ही काम आता है, तो उसके लिए ये सब स्कूल लाइफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद कोई सिखाने वाला होता नहीं। আপকামিং যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নিটৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকক তোমালোকে কি ক'ব বিচাৰিবা? তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰিম যে এতিয়া মানে তোমালোকে দেখিছাই যে নীটটো কিমান কম্পিটিটিভ হৈ গৈছে, তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত আৰু তোমালোকে প্ৰেক্টিচ ভালকৈ কৰিব লাগিব, টেষ্ট যোনখিনি হয় এই গোটেইখিনি এটেণ্ড কৰিব লাগিব, আৰু নিজৰ এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব যে মই মানে ধৰি লোৱা ফিজিক্সটো আগত কৰিম বা বায়'লজিটো আগত কৰিম, আৰু সেইটোলৈ মানে ষ্ট্ৰেটেজিটো লাষ্টলৈকে ষ্টিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ যোনখিনি তোমাৰ টেক্সট বুক আছে, NCERT আছে, মডিউল আছে, সেইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, ছল্ভ কৰিব লাগিব, তেতিয়াই তোমাৰ মানে গোটেই প্ৰচেছটো স্মুথলি চলি যাব। अर्णवे बहुत धुनिया कथा कैसे स्ट्रेटेजीबूर मैं बहुत प्रपारली बनाब लगे बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेट, तो तुम कि कब विचार माने विचारा जो रिगार्डिंग मतलब जी स्ट्रेटेजी जो मैं बिल्डअप लगे जो इनिशियल डेज जो आम एनेकुवा धৰণৰ पार्टिकुलर कोर्सेस बुक लगे आगबाढ़ विचारों किमानखिनि हेतु स्ट्रेटेजी मैं मैटर करे टू मुव फरवर्ड इन दिस लाइन? स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करे। नीटत आमी चाइছোঁ যে बायोलॉजी पार्टिकुलारली सब NCERTৰ পৰা আহি আছে 2019ৰ পৰা, সেইকাৰণে NCERT ভালকৈ যদি আমি পূৰা ভালকৈ পঢ়ি যাওঁ থৰলি, তাতকৈ আৰু এক্সট্ৰা সিমান ফ'কাছ নালাগে বেলেগ বুকত, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট থিং, সেইটোও ষ্ট্ৰেটেজিৰ থ্ৰুৱে আহে। আৰু ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, আৰু ছেম ফৰ ইনঅৰ্গেনিক NCERT ফ'কাছ কৰিব লাগিব ইনঅৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি। NCERT ৰেফাৰেঞ্চ বুকছবোৰো যিবোৰ এভেইলেবল আছে সেইবোৰৰ পৰাও হেল্পফুল হয়নে? এনে NCERTৰ বাহিৰত মই ৰেফাৰেঞ্চ বুক সিমান ইউজ কৰা নাই, এনে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে মই মডিউলছ ইউজ কৰিছোঁ, আৰু ৰেফাৰেঞ্চ এনে এক্সট্ৰা ইউজ কৰা নাই। NCERTৰ যিবিলাক বেষ্ট এক্সট্ৰেক্ট কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাকে কৰিছোঁ অলপ অলপ। अपकमिंग जो मतलब एक्सपीरियंस है जो इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर नीट क्लियर करना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे? ये तो मैं फिर से फोकस उसमें ही करूँगा कि एक सेल्फ स्टडी और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगर एक अच्छा टीचर मिल जाता है गाइडेंस के लिए, तो उसके साथ अगर सेल्फ स्टडी में डेडिकेशन है तो वो आराम से कोई भी नीट क्लियर कर सकता है. बट मोस्टली क्या होता है कि लोग लास्ट में छोड़ देते हैं. मैंने भी बहुत से दोस्तों को देखा है कि मतलब वो लोग अच्छा से प्रिपेयर कर रहे हैं बट लास्ट में थक जाते हैं, क्योंकि लास्ट में थोड़ा एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है. तो वही मतलब ये नीट में ऐसा ही करना पड़ता है कि कंटिन्यूस मेहनत चाहिए और हारना नहीं है, बस यही है. চ' এয়াই আছিলে আজি আমাৰ লগত NPSৰ কিছু ষ্টুডেণ্ট যোনে ৰিচেণ্টলি নেটৰ এক্সামছ ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু বহুত ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে. আশা কৰোঁ আপোনালোকে অনুষ্ঠানটি চাই কেনে খুবেই ভাল পালে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পজিটিভ নিউজ আপোনালোকে আমি আগতীয়াকৈ আনি থাকিম. আৰু আজিলৈ আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ. ফৰ মোৰ নিউজ এণ্ড আপডেটছ কিপ ৱাচিং দি আছাম ট্ৰিবিউন এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছ. থেংক ইউ.